So today we will discuss about wave functions. What physically is this function? What is physical significance of this function? And how much important it is in describing the uh, mathematics of quantum physics. So we start with a basic. हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे यूज होता है क्लास 11 12 की मैथमेटिक्स में। एक क्लास है जिसमें 14 स्टूडेंट्स हैं। 14 स्टूडेंट्स में से 14, एक स्टूडेंट की एज 14 इयर्स है। 15 इयर्स एक स्टूडेंट की एज है। 16 इयर्स तीन स्टूडेंट्स की एज है। दो स्टूडेंट्स की एज 22 है। दो की 24 है। और पांच स्टूडेंट्स की 25 इयर्स है। और हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एज जे। जे इज द एज, एन इज द नंबर। 14 इयर्स कितने बच्चों की एज है? एक बच्चे। तो एन 14 की वैल्यू 1 हो गई। 16 इयर्स कितने बच्चों की है? 1 2 3, 3 हो गया। तो एन 16 की वैल्यू 3 हो गई। 23 इयर्स कितने बच्चों की एज है? किसी की नहीं। तो एन 23 इज 0। इन सब नंबर्स को हम अगर सम कर दें तो आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको कि किसी स्टूडेंट की एज 15 इयर्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या। तो हमारे चार्ट में 15 इयर्स एक बच्चे की एज है। तो न्यूमरेटर में 1 रहेगा अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज इज 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको सिंबॉलिक जनरलाइज फॉर्म में हम इससे लिख सकते हैं nj, that means the number of students whose age is j upon total number of students. This is the probability. And sum of all the probabilities is 1. The total probability is 1. That is universal. अब हम इसको जनरलाइज करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लासरूम से बाहर निकल। एक कोई क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू दो लिमिट्स के बीच है, x और x प्लस dx। इनके बीच में उसकी वैल्यू कुछ होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी रो x इंटू dx। dx इज द इंटरवल in which we have to calculate the probability, or rho is the probability density. So probability will be equal to the probability density into the volume element. So probability in this limit a to b can be defined as an integral of the probability density over the length dx in the limits a to b, or universally minus infinity to plus infinity. The integral is 1, which means that the particle exists in space. For a particle to exist in space, this should be 1. By the end of the 19th century,
The physicists were not able to explain the black body radiation, the photoelectric effect, the spectral lines emitted by elements. So, in the start of the 20th century, scientists worked on quantum physics and found it to be successful in explaining these concepts. But कहीं पे हमको क्लासिकल नेचर एक्सप्लेन कर देता है, कहीं पे क्वांटम नेचर से हम फिनोमेना को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये डुअल नेचर चल रहा, एक यूनिफाइड थ्योरी अभी तक पूरी डेवलप नहीं हुई। तो जैसा हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ फोटॉन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चाहे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो, प्लैंक्स लॉ के टर्म्स में प्लैंक की भी हाइपोथेसिस ये थी कि एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी एनर्जी इज, फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। तो absorption emission is in the form of a quanta of particles, and these, while traveling, they behave as waves. They are emitted as or absorbed as particles, but they travel as waves. So light behaves simultaneously as a wave and a flux of particles. तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जैसे हमने देखा कि मैटर वेव्स की पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी के टर्म्स में बात की गई। तो another analog of this uncertainty is the probability, which is equal proportional to the square of the amplitude of the field. So behavior of a photon can only be probabilistic, or information about the photon at a particular time t is given by the electric field, and whose solution is obtained by the Maxwell's equation. Because Maxwell's equation describes the behavior of the electric and magnetic fields. और इस फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है, the square of the amplitude gives the probability of a photon. It was Davison and Germer जिन्होंने निकल टारगेट पे कैथोड रे ट्यूब से इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए, and after measurements they verified the de Broglie hypothesis that all the matter particles behave like wave. So now we come to wave function. Quantum mechanics, we describe a state. Quantum is a state of particles. And the state is characterized by a complex wave function. This state is characterized by a function psi, which is a complex quantity and depends on the position and time of the photon. As you can see, this is a complex quantity, A plus IB. I can write its square modulus as the product of the wave function into the complex conjugate of the wave. See, A plus IB into A minus IB, which gives me A square plus B square. Since xi is a complex quantity, but xi square is a real quantity. And probability also is always a real quantity.
So the square of xi denotes the probability of finding a particle in a particular region. And this probability density is given as the square of this wave function into the volume element, dx dy dz. Let us consider one dimension system. That means हम अपने को एक डायमेंशन में कन्फाइन रखें. तो किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी एक एलिमेंट dx, x डायरेक्शन को हम ले रहे हैं, एक dx एलिमेंट में पोजीशन A से B के बीच में कितनी होगी is given by the integral of the square of the wave function in the limits A to B. अगर इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है and its value is 1, that means the particle is sure to exist in the limit. And this kind is of a wave function, or this process is called a normalization, जहां पे the product of wave function and its complex conjugate integrated in the limits is 1, that then the function is called normalized wave function. If this integral is 0, that means the particle is not to be found in the limits, or in other words, the particle, if the limits are minus infinity to plus infinity like this case, it implies that the particle does not exist at all. So Schrödinger in 1926 came out with a wave equation in terms of the wave function. This is the equation given by Schrödinger. This is a three-dimensional equation having all the three variables, x, y, z. This is the Laplacian operator. So this is V is the potential energy. So this is the Schrödinger equation. In one dimension, we will take only one variable, x. These two terms will be 0. In one dimension, it will be this equation. We will discuss this Schrödinger equation in our coming lecture. So I end up here. So basically what today we revised is that wave function is a measure of the probability. The square of the wave function denotes the probability of finding a wave particle in the limits, in the boundary over which the integration is done. Wave function की importance है कि it denotes, its square denotes the probability of finding the particle. And wave function corresponds to amplitude of the field. But the exact definition is in terms of probability, that the square of the wave function denotes the probability. So I end it here today. Thanks for listening. Good day. Have a good day.